Yes, welcome to the channel. Here today we have a question based on trigonometry for class 10th. The question which is in front of you in triangle ABC, right? ABC, right angled at B, AB is equal to 7 centimeter and AC minus BC is equal to 1 centimeter. Determine the values of sin C and cos C. Sin C means this angle. Okay. Now, here it is, difference is given to you of two sides. So, first of all, we can take Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हमारी क्या कहती है? Perpendicular square plus base square which is equal to hypotenuse square. Now, here perpendicular, this is the perpendicular which we can take, that is BC. Base is AB square and hypotenuse is AC square. Now AB is given to us, that is 7 square and AC square minus BC square. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पर हम देखें AC माइनस BC स्क्वायर की इक्वेशन आ रही है. हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. इस सिंपल आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका ए सी प्लस बी सी इंटू ए सी माइनस बी सी एंड दिस इज 49. तो अब यहाँ पर देखें आप बी ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो आपको ए सी प्लस बी सी की वैल्यू मिली, that is 49. So AC plus BC is equal to 49. और इस इक्वेशन को हम ले लें तो इसकी हेल्प से we can determine AC और BC की वैल्यू using simple adding this to 2AC is equal to 49 plus 1, that is 50. So AC will be equal to 50 upon 2, that is 25 centimeter. तो AC which we have got it is 25 centimeter, इसको लिख लें यहाँ पे. फिर उसके बाद में that you can determine the value of BC by this equation of B, or you can use this. AC is known to you, that is 25 minus BC is equal to 1. So it is BC is equal to 25 minus 1, that is 24 centimeter. So we have got this 24 centimeter. हमेशा इस टाइप से लिखते रहे तो इट विल बिकम वेरी इजी टू आइडेंटिफाई व्हिच साइड वी आर यूजिंग. नाउ दिस एंगल हियर sin C means perpendicular for this angle is this and base will be this and hypotenuse will remain the same. So we have to determine sin C for this particular angle. ये perpendicular हो गया, that is AB and upon AC. AB is known to you, that is 7 और AC आपके सामने 25. Similarly for cos C क्या होगा? ये इसके लिए बेस का काम करना और हाइपोटेन्यूज. तो बेस जो है आपका BC हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, BC आपका 24 है और this is. So finally we have got the answer. और आंसर निकालने के लिए हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया. देन वी हैव यूज्ड द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए. तो एप्लीकेशन इज वेरी इजी, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो यू मस्ट नो ऑल द आइडेंटिटीज, algebraic identities that you can apply over here depending on the questions. So this way we can go in trigonometry in an easy manner, step by step. So I think it will be sufficient to explain it, and we will have more questions on the trigonometry. So be with us, share the videos and subscribe the channel. You will get more videos on the mathematics of class 10 for preparing board examination. It may be any board, CBSE or any other boards. You can do it very easily by just understanding the questions. These type of questions generally asked in the examination.
based on your NCERT books and all these. So try to do these questions so you will have more benefit for getting more marks and understanding the concept. Okay, thank you.